I request Dilip sir to take Michael Ludger, a professional footballer from Netherlands, to get introduction from the team. Sir. And so, hello and welcome to a brand new season. It's 2022, and the second game of the day is between Jodhpur and Bharatpur. The opening game, Chittorgarh defeating Jhunjhunu district by 4-0. They qualified for the quarterfinals. Rajasthan State Senior Women's Football Championship back with its first edition, and it's going to be a fine game between these two teams. Important guests in attendance getting introduced to the sides, and I'm Sohan Poddar in the commentary box, and another exciting season is on the cards. It's going to be very important to see how this women's grow into professional footballer in this edition of the Rajasthan State Senior Women's Championship. It's a new territory for the teams in terms of meeting in this league. For both the debutants, just in case you've been wondering, it's a knockout game. 8 out of 16 gonna qualify for the quarterfinals. Bhilwara will also play as the game mature. Lots of uncertainty, lots of mystery on whether the State Women's Football Championship will happen or not, but credit to the State Football Association, including the All India Football Federation and all those are part of it, making sure the tournament happens. Lots happening in the world of sports, in international football, where Canada tries to catch up with what has been a very difficult period for the entire globe due to the pandemic. But football always gives joy, always makes you think that the things can be okay. It is a case of young players, of course, and not just for Jodhpur but also for Bharatpur as well. Rajendra Singh, the coach, sticks to the principles of defending deep and hitting teams on the break. These are the match officials. The referee Akshay is going to be assisted by Bharat and Jaipal. Jagdish is the fourth official, and match commissioner Rafiq Sindhi. These are the lineups. Jodhpur with Sangeeta, Tanuja, Vadanshi, Ishika, Raksha, Anita, Tanu, Urmila, Suman, Mamta and Nirmala. And for Bharatpur, it's going to be Anuradha between the sticks, Kusum, Divya, Kavita and Harshita in defense, Kushi, Ruby, Nidhi and Mini making up the midfield four with Survi and Kunti up top. They've got a different spot in terms of kit, but hopefully the same fervor of supporting this football team as the team gets ready for their first ever State League Championship game. अभी ये दोनों दिख जाएंगे. जोधपुर है, हाँ. Jodhpur is a team in yellow. For both the teams, the surroundings are surely familiar, but the league is not.
is that गाड़ी fact which अंदर they अंदर want ले to आओ उस तरफ change, से PWD की तरफ and से it all starts गाड़ी here. अंदर ले आओ It PWD will be की तरफ से different, it will be difficult, it will be ओके एक मिनट demanding, रुको but वहीं if पे you गेट work खुल रहा hard enough, है it रुको will also गेट be खुल very, रहा very rewarding. है गाड़ी अंदर ही ले लेना Once the formalities are done, both the teams will file together in formation and take colors under the blue sky here at the Union Football Ground in Jaipur. The second game of the tournament is minutes away, and Jodhpur and Bharatpur head to head very soon. ये गेट के ऊपर बाइक किसकी है Ruby is going to be a very crucial player as far as Bharatpur is concerned. She is the attacking threat, the creative force of Bharatpur. Mini is also there, the number 12, playing on the left hand side, and we are off with game number 2. And 518 kilometers separate these two teams in terms of their geographical location. But in a vast country like India, 518 kilometers is nothing. But in football, 1 point means everything. And so, kickoff here in Jaipur. The team in white, Bharatpur, is operating from the right to left of your screen, and defending their goal on the left hand side is the team in yellow, Jodhpur. And making the first move, the team in yellow, easily defended by Kavita. And drops for Kushi in the middle of the park. She plays it to the left for Harshita. And now trying to move forward is Bharatpur. The build-up didn't materialize. Lots of homegrown players on both the sides, in a way optimized, not just playing football. They aim for winning titles, but also develop the sport, develop the players in their own region. And that's the objective of this competition. We are not so familiar with the players for the time being, but we'll get used to as the game progresses. Jodhpur, of course, is the second largest city in Rajasthan and officially the second metropolitan city of the state. It was formerly the seat of the princely state of Jodhpur state, which was historically the capital of Kingdom of Manawar, which is now part of Rajasthan. Meanwhile, making their first move, hops past a couple of challenges. Surbi looking for support, and it comes in the form of Mini. Back to Surbi's feet. Easily defended by Jodhpur for a throw-in. Jodhpur is also a very popular tourist destination, featuring many palaces, forts, and temples set in the stark landscape of Thar Desert. It is popularly known as the Blue City among people of Rajasthan and all over India. And it serves as the administrative headquarters of the Jodhpur district, of the Jodhpur division. There's going to be 8 games coming your way, and all of them live on Sportscast India. Just a reminder to our viewers, it's going to be 25 minutes and a half. There's the chance for Jodhpur. A tame attempt, easily collected by Anuradha. Sangeeta with the header.
And we have the opening goal here. And it's Jodhpur who takes the lead. And just against the run of play. And Bharatpur not been able to defend that confidently. And they go down within the first 4.5 odd minutes on the clock. Look at that. From an angle on the right, not defended. Goes for that scoop attempt. And just over Anuradha into the back of the net. And we have the opening goal here. Now driving forward Jodhpur in search of more. This time interception from Kavita. Divya helps it forward. And again, falls to number 7. Who nods it onto her own path, Khushi. The ball forward is towards nobody. They will be aiming for a quick response. Suman looking to do the damage again. This time wide on the far left. She's up against 2 white shirts. Winning a throw-in. And now laid back. Chance for a shot. Trying to sort her feet out. Sangeeta with the goal already. And now we'll be looking for the second. One more time trying to control the ball. The pace was a tad too heavy. An awkward bounce involved as well. Mini. The possession is now with Bharat. Harshita from the left. She's been harassed by Vedanshi. Harshita keeps control of the ball. A clever play, but couldn't read the pass from Khushi. Here's the Sangeeta Thakuri's goal. They're separating the two teams. There's the forward ball, but a couple of white shirts in the way, providing that defensive cover. The clearance is very, very poor. Trying to attack from the left. Went for the difficult pass when there were simpler options. Seeking out for Anita Chaudhary, the number 11, on the far left. And now with the ball is Khushi. It's a good play from Bharatpur now trying to accelerate past Tanu.
Stopped on his tracks by Namita. It's 10 minutes on the clock. So Jodhpur leading by a narrow margin. Tanuja taking the goal kick. It's a very poor one, in fact. Stride. That was a bit of a chance. Defining touch was missing. Collects the ball. Kushi's looking for adventurous pass. Stood strong there. Jodhpur's defense. This time it's a handball and free kick in favor of Bharatpur from about 22 yards out. A pretty decent area to win a free kick. There's a 25 minutes half. The story so far in favor of Jodhpur. Let's see how Bharatpur will make a comeback into this game. Goes for the free kick. A good attempt from Harshita. Just not on target. Rajasthan's state football championship in women's category. We're having the women's league and across the country now. This time it breaks once again for Jodhpur, and it's 2-0 in fact. Sloppy in defense, Bharatpur, and they have to pay the price as Jodhpur doubles their lead. That was the attempted clearance from Divya coming off in yellow shirt and knocks it onto her path, tempting bounce and then slots it into the back of the net. There's no margin of error. Yes, every game is a knockout. No time for damage control. And the comeback got to be quicker. The response got to be quick. They're struggling to fix those leaks in their defense. Bharatpur. Jodhpur here right on top. And now in the driver's seat. Again a foul. Khushi. They will look to make the most of this set piece. Khushi takes it, floats it into the penalty area. It's gone behind for a corner. The first corner of the game in favor of Bharatpur. They are trailing 2-0. Only one player in white inside the box and one on the left edge of the area. Not too many players interested. Maybe they will opt to play it short. Let's see what trick
She's got up her sleeves. Back-to-back corners for Bharatpur. Delivered towards the near post. Can't clear the first marker. Three corners in a row. This time we're getting good purchase on it. And just a touch. Could have been the opening goal for Bharatpur in this game. They could have reduced the margin and make things interesting. Wonderfully delivered towards the back post. Good quality on that corner. Nicely cut out high up into the opposition's half. And that was a stinging attempt. Straight to Tanuja. Slightly scattered the play. From the left is Mini. Was looking to cut in. Urmila clearly saw the plan. And now hoisting forward. A good challenge from Kusum. Khushi. Looking the better side. Jodhpur in the first 16 minutes of the first half. Bharatpur slightly lost out there in the middle of the park. An aimless ball. A few good teams in the likes of Bhilwara, Kota will be in action. It's an action-packed day. The Rajasthan State Women's Championship. 4 goals in the first game. 2 already here. Both the teams trying to dish out a good brand of football. A miscued clearance. Door opens from the right this time, and a shot by the number 10. That was Ruby with the attempt. And narrowly missing out. They're looking good, Bharatpur. And Nirmala with the touch. And given away to a white shirt. And now picking up pace. Ruby. Raksha. Defending that with ease. On the left hand side.
very organized at the back, Jodhpur. And now they would look to launch a quick counter, trying to break away. Jodhpur, silky skills from Anita Chaudhary. And Anita Chaudhary keeps going. This is looking good for Jodhpur. Nicely cut out by Kusum. And she steps across to snuff out the danger. Now in a lot of space in the middle is Harshita. Harshita taking on the first man and the second. Options on the right. Harshita all by herself. It's still Harshita, this time sent in with pace. Tanuja was alert. 5 minutes of play remaining in the first half. An overhead ball. Off her mark, Anuradha. The whistle has gone. A throw in for Bharatpur. It's crowded out in the middle into a crossing position. There's the pullback on the edge of the penalty area. Picked up and then sets up a shot. A low attempt. Blocked by Kavita. And then runs straight to Anuradha. She is looking enterprising. Mini from the left. Putting up a good show here. Harshita, very, very skillful and almost walking past the entire yellow shirt in defense. Not getting enough support up top, even though there are plenty of white shirts loitering around. The clearance is straight to the number 4. Needy helps it long. And that is going to be a free kick. And finally, some red spite for Jodhpur. Back-to-back moves from Bharatpur. Oh, can she make it 3-0? The ball played in the middle was only towards the white shirt to clear. And now she is striding out of defense. Very, very confident play from Bharatpur. Just not finding the mark in front of goal. Khushi capitalizing on a bad touch and then poked on the left hand side. The right full back was ready. Adjusting it down. Trying to turn. Takes a tumble.
It's not properly cleared. Tanuja call came in early from the goalkeeper. It's given as a goal kick. Just the closing stages of the first half. It's going to be the last piece of action of the first half. It's a free kick for Bharatpur. Just a minute added on to the regulated 25. Nice interception. A shot from distance. It's gone wide for a goal kick. And now double teamed. And Bharatpur recovers the ball. Just trying to be innovative. And that's the half-time whistle. So it's 2-0 going into the break in favor of Jodhpur. A couple of early goals separating these two teams. We'll come back shortly with the second half.
और जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा की मिसाल है कि अतिथि देवो भव, ऐसा कहा जाता है, अतिथि ही ईश्वर के समान है। तो उनके स्वागत सत्कार के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मैं हमारे खिलाड़ियों से भी निवेदन करूंगी, जोरदार तालियों से हमारे अतिथि का स्वागत किया जाए। भाई मैं बोल रहा हूँ कि कैमरा ले ले। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी हमारी मुख्य अतिथि से और सभी संचालन समिति के सदस्यों से कि वो ध्वजारोहण में शामिल हों और मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया जाए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे मुख्य अतिथि जयपुर राजघराने के दिल से दिया बाईसा का। मैं निवेदन करूंगी हमारी मुख्य अतिथि से कृपया ध्वजारोहण करें और इस क्षण को मैं एक पंक्तिबद्ध करना चाहूंगी। आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यही पहचान है। एक बार जोरदार तालियां इस तिरंगे के लिए। आप सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें, एक जगह खड़े हो जाएं ताकि नेशनल एंथम को शुरू किया जा सके। बहुत धन्यवाद आप सभी का। भारत माता की एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि का। मैं अनुरोध करूंगी सभी अपना स्थान ग्रहण करें। जितने भी अतिथिगण यहाँ मौजूद हैं कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आभार, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज राज्य स्तरीय महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का 42वां संस्करण शुरू होने जा रहा है। इस 3 दिवसीय संस्करण की शुरुआत दिया कुमारी जी के हाथों से हो रही है और एक बार जोरदार ताली से स्वागत है। आपको बता दूं इस 42वें संस्करण की जो शुरुआत है इसका आयोजन RFA यानी राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है और उनके सचिव भी यहाँ मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए RFA के सचिव शेखावत जी का भी। सर ग्रीन करें। स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी
कि दिया कुमारी बाईसा का स्वागत किया जाए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी दिलीप सिंह शेखावत जी को, जो कि राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हैं। सर के द्वारा दिया कुमारी बाईसा राज का स्वागत किया जाएगा। जोरदार तालियां। उसके बाद यूनियन फुटबॉल क्लब के सचिव महिपाल स्वामी जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो प्रिंसेस दिया कुमारी जी का स्वागत करें। पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही प्रताप भानुजी सिंह शेखावत अगर यहाँ मौजूद हैं, यहाँ उपस्थित है, माफ कीजिए वो यहाँ नहीं है। राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन जय नारायण जी गहलोत जी से भी मैं निवेदन करूंगी कि वो दिया कुमारी बाईसा का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी यूनियन फुटबॉल क्लब के कोऑर्डिनेटर अभिनव स्वामी से कि वो राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव दिलीप सिंह जी शेखावत का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। वही राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट सचिवों का भी स्वागत किया जाएगा। मैं नाम लेना चाहूंगी कैलाश जी खटेक, जो कि आरएफए के ट्रेजरर हैं, अगर वो यहाँ उपस्थित हैं। रफीक सिंधी, ये आरएफए के सचिव हैं, जॉइंट सेक्रेटरी। हेमंत सिंह परिहार, और साथ ही हमारी गर्ल्स कोच है सरोज चौहान जी, उनका भी स्वागत किया जाएगा। मैं चाहूंगी श्री महिपाल स्वामी जी गर्ल्स कोच सरोज चौहान जी का स्वागत करें। स्वागत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब हमारे आज की मेहमान, हमारी मुख्य अतिथि प्रिंसेस दिया कुमारी बाईसा के बारे में कुछ परिचय देना चाहती हूँ, आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ। श्रद्धेय दिया कुमारी जी और इनके पूर्वज जयपुर महाराजाओं की प्रतिबद्धता खेलों के प्रति अद्वितीय रही है, जो आज भी अक्षुण्ण है। अपनी प्रजा के लिए रामनिवास बाग और इसमें विभिन्न खेलों जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, जिम्नेजियम आदि की स्थापना के प्रवर्तक महाराजा सवाई राम सिंह ने 1868 में शुरुआत की, जिसे महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय और उनकी पत्नी, माफ कीजिएगा, प्रख्यात पोलो खिलाड़ी सवाई मान सिंह द्वितीय और उनकी पत्नी महारानी साहिबा मरुधर कंवर ने इसी रामनिवास बाग के दक्षिण पश्चिम कोने में 1928 में महिला क्लब की स्थापना की, जिसमें इंडोर गेम्स जैसे कैरम, बैडमिंटन, शतरंज आदि खेले जाते थे। ये उस काल की बात है जब राजस्थान की महिलाएं लंबे घूंघट से बाहर आने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, और आज की स्थिति आप सभी के सामने है।
रामनिवास बाग को पुनः स्पोर्ट्स हब बनाने में यूनियन फुटबॉल क्लब की वंशानुगत मुख्य संरक्षक दिया कुमारी जी के सानिध्य में यूएफसी के सदस्य लगातार प्रयासरत हैं और साथ ही खेलों की पुनः स्थापना भी की जा रही है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे फिर से हमारी मुख्य अतिथि का, जो कि यूनियन फुटबॉल क्लब की वंशानुगत संरक्षक भी है, हमारे यूएफसी के सभी सदस्यों का और साथ ही आरएफए की सभी टीम का। इसके बाद मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी संक्षिप्त में दिलीप सिंह शेखावत जी का, जो कि राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव हैं। ये लोग सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। इनके कार्यकाल की ही महिमा है कि खटारा बसों और ट्रेनों के जनरल डिब्बों में धक्के खाकर सफर करने वाले फुटबॉलर आज के समय में 5 स्टार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं। लगातार वो 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो ये इन्हीं की देन है। एक बार फिर से तालियां, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। और साथ ही राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सभी जिला सचिव एवं सदस्य जो यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी और स्वागत करना चाहूंगी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ लगातार बजनी चाहिए, क्योंकि आपका जोश और उत्साह ही यहाँ नजर आएगा। आखिरकार ये एक खेल का मैदान है, तो खिलाड़ियों की तालियां लगातार बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी यूएफसी के सचिव महिपाल स्वामी जी, जो कि इस इवेंट के संयोजक भी हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि वे अपना संबोधन के जरिए यूएफसी और आज के कार्यक्रम से सभी को अवगत कराएं। तो एक बार महिपाल स्वामी जी का जोरदार स्वागत। यूनियन फुटबॉल क्लब प्रांगण में सभी यहाँ मौजूद लोगों का तहे दिल से स्वागत है। भाई जिराज की बार बार हर तरीके से हर उपमा के साथ यूनियन फुटबॉल क्लब और फुटबॉल खिलाड़ी तारीफ करते हैं। वो इसलिए कि इसी परिवार और भाईजीराज के पूर्वजों की देन है ये रामनिवास बाग और ये यूनियन फुटबॉल क्लब ग्राउंड, जहाँ आज हम बैठ करके भाईजीराज का दर्शन कर पा रहे हैं और थोड़ी देर बाद फुटबॉल खेलेंगे। रामनिवास बाग को पुनः स्पोर्ट्स हब बनाने में भाईजीराज ने यूनियन फुटबॉल क्लब को खुली छूट दे रखी है। भाईजीराज का हर तरीके का सानिध्य यूनियन फुटबॉल क्लब और हर किस्म के खिलाड़ियों को, खास तौर पे महिलाओं को उपलब्ध। मैं चाहूंगा कि भाईजीराज का सभी तहे दिल से स्वागत करें, तालियां बजाकर। मैं यूनियन फुटबॉल क्लब का थोड़ा सा इतिहास बता दूं कि महाराज राम सिंह जी के समय में वैद लच्छी राम जी स्वामी ने अपने किशोर अवस्था में महाराज राम सिंह जी के सानिध्य में यूनियन फुटबॉल क्लब की स्थापना की थी, जिसे बाद में स्वामी जयराम दास और उसके बाद में स्वामी मंगलदास वैद जी ने संभाला और उसके बाद मैं आपकी सेवा में हूँ। हम सभी ने जयपुर राजघराने के सानिध्य में इस क्लब की पर्याप्त सेवा की है और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। यूनियन क्लब की संपूर्ण टीम, संपूर्ण सदस्य राजघराने के शुक्रगुजार है। यूनियन फुटबॉल क्लब को मदर ऑफ फुटबॉलर्स का टाइटल प्राप्त है और इसलिए कि यूनियन फुटबॉल क्लब ने जयपुर से जितने भी फुटबॉलर तैयार हुए हैं वो यूनियन फुटबॉल क्लब ने ही तैयार किए हैं, जो विभिन्न विभागों में जाकर उन्होंने नौकरी प्राप्त की। और खुशी की बात है कि जब मैच होते तो वो विभाग की तरफ से खेलते और यूनियन क्लब के खिलाफ खेलते, उसमें यूनियन क्लब को खुशी होती, उतनी खुशी होती जितनी एक क्लर्क पिता के कोई आईएएस बेटा उसके सामने आईएएस बन जाए और उसके सामने हुक्म चला जाए। मैं मनोज भारद्वाज साहब से निवेदन करता हूँ कि आगे का संबोधन दें।
अरे नीचे आ इधर दिलीप सिंह जी साहब RFI सेक्रेटरी साहब। सभी को नमस्कार। आदरणीय हमारे दिया कुमारी जी सांसद राजसमंद, मैं इनका अपार आभारी हूँ जो अपना अमूल्य समय निकाल कर आज हमारे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए आप यहाँ पधारे। मैं आप यूनियन ग्राउंड के श्री महिपाल जी, भानु कुमार जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये ग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए इन्होंने हमें प्रदान किया। उनके सहयोग और उनकी जो हमें सहयोग दे रहे हैं उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं दिया कुमार जी ने जो आज हम बुलाने का मकसद ये है कि हम फुटबॉल में कुछ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, महिला काम कर रहे हैं। बच्चे जो महिला फुटबॉल हमारी बहुत पिछड़ी हुई थी, उसको हम धीरे धीरे 4 साल से हम धीरे धीरे आज माहौल देख रहे हैं कि पहले 2 टीम आती थी, 5 टीम आती थी, आज 17-18 टीम हमारे सामने बैठी है। तो ये बच्चों को हम कैंप लगाते हैं, अच्छी चैंपियनशिप कराते हैं। इनको जो जनरल डिब्बों में बच्चियाँ जाती थी उनको हम बाइक फ्लाइट में इन बच्चियों को भेज रहे हैं। ग्रामीण टूर्नामेंट हो रहा है, बाइक फ्लाइट में टीमें जा रही है, ये सब आपके सामने साक्षी है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, बच्चों पे आशीर्वाद बना रहे आपका। मैं राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन से आपको इंश्योर करता हूँ, हम जब भी बच्चों का प्रोग्राम करेंगे, बच्चों का प्रोग्राम करेंगे, हम आपको की आशीर्वाद देते रहेंगे। एक बात मैं सुने सभी का, हमारे जिला संघों से हमारे RFS के पदाधिकारी चेयरमैन साहब गहलोत जी आए हुए हैं, सेक्रेटरी आए हुए हैं, तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सब आए यहाँ तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बोलना चाहूंगी मनोज भारद्वाज जी को, जो कि पूर्व उप महापौर हैं, वो अपना संबोधन प्रकट करें। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान के राजसमंद से लोकसभा सांसद, सवाई माधोपुर से पूर्व विधायक और विशेष रूप से जयपुर के प्रिंसेस, यूनियन फुटबॉल ग्राउंड के महासचिव महिपाल जी स्वामी, राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन जो कि ये कार्यक्रम कर रहा है, इसके चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब यहाँ है, डायस पर मौजूद सभी गणमान्य लोग और जो टीमें यहाँ भाग लेने आई है, इन सभी के खिलाड़ी। मैं सबसे पहले एक ही बात कहूँगा कि जब हम खेल खेलने आते हैं तो खेल को खेल की भावना से खेलें। हार और जीत दोनों खेल का हिस्सा है। इसी चीज को, इसी भावना को ध्यान में रखकर, क्योंकि आज से लगभग 160 साल पहले जब जयपुर राजघराने ने रामनिवास बाग की स्थापना की शुरुआत की थी, 160 साल पहले जब 50,000 आबादी को ध्यान में रख करके, 250 साल पहले जब 50,000 की आबादी को ध्यान में रखकर एक सुंदर शहर जिसका पूरे विश्व में नाम है, इसकी स्थापना की। और 160 साल पहले जयपुर को पूरी ऑक्सीजन मिले, जयपुर को लोगों को खेलने का एक माहौल मिले, जयपुर को युवाओं को देश में विदेश में जाने के लिए ट्रेनिंग का अवसर मिले, इसके लिए ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थापना की गई। इसमें यूनियन फुटबॉल ग्राउंड का एक था, लॉन टेनिस के यहाँ थे और भी कई प्रकार के गेम्स यहाँ पर थे। तो निश्चित रूप से जयपुर राजघराना जो है खेलों के प्रति समर्पित रहा शुरू से और एक विजन के साथ काम किया है। किंतु समय के साथ साथ ये चीजें कुछ और हाथों में जाती गई और इसका स्वरूप बिगड़ने लगा। काफी लंबे समय यूनियन फुटबॉल ग्राउंड, जो कि मैं जब बचपन में हम बहुत छोटे थे अब देखा करते थे, रोज फुटबॉल वहाँ हुआ करता था, रोज वहाँ वॉलीबॉल हुआ करता था, रोज शहर के दूर दूर से लोग आकर के, बच्चे और बुजुर्ग आकर के वहाँ पर रोज खेला करते थे। किंतु कुछ समय बाद इसका स्वरूप बिगड़ा। जब 2005 में महिपाल जी ने मेरे को इसके साथ जोड़ा, अब इसका इतना विकट स्वरूप हो चुका था, किसी प्रकार की राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय या मैं कहूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट में यूनियन फुटबॉल ग्राउंड में नहीं हुआ करते थे। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप इसके चीफ पैटर्न हैं इस ग्राउंड की, ये आपका अपना ग्राउंड है। ये ग्राउंड 2005 के पहले लगभग 20 साल 25 साल तक इसकी क्या स्थिति थी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ आप राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय सोचिए, जो कि यहाँ गेम्स हुआ करते थे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम भी होना बंद हो गई। 2005 से जब कुछ लोगों का समूह जुड़ा, अच्छे मन के साथ जुड़ा,
एक खेल की भावना के साथ जुड़ा कि हमको इस ग्राउंड को ठीक करना है और जयपुर को दोबारा, जो कि जयपुर राज परिवार ने एक सोच के साथ इसको किया था। क्योंकि मेरा मानना है कि जो जयपुर का होगा उसको ही जयपुर की संस्कृति का, गौरव का और जयपुर की जो आजरा जो है उसका दर्द होगा। तो कुछ जयपुर के मूल लोग मिले, और क्योंकि आप जयपुर के राजघराने के हैं, आप चीफ पैटर्न यहाँ की हैं, आपको भी दर्द होगा बिल्कुल जब जयपुर के धरोहर के साथ कोई छेड़खानी होगी, जयपुर की संस्कृति के साथ कोई छेड़खानी होगी। तो निश्चित रूप से ये आपका अपना ग्राउंड है। आप यहाँ आज गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में, किंतु ये आपका अपना ग्राउंड है। और इस मैदान के बारे में, इस ग्राउंड के बारे में, इस खेल के बारे में, और जो कि भविष्य में कि एक यहाँ पर खेलों का कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, उसके बारे में आपकी राय और आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मैं कह रहा था कि 2005 के बाद में जब इस ग्राउंड को कुछ अच्छे लोगों के हाथ में, जिसमें से एक स्वामी जी थे, महिपाल जी स्वामी, जिस प्रकार से दिन रात मेहनत की, कुछ लोगों के समूह ने जो मेहनत की, उसमें कुछ योगदान मेरा भी रहा होगा। किंतु आज जो हम रूप देख रहे हैं, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले यूनियन फुटबॉल ग्राउंड जाके अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है, जिसकी एवज में हमको ये ग्राउंड 2 अलॉट हुआ है। ये भी मतलब ये ग्राउंड भी जयपुर राजघराने का ही पार्ट था। यहाँ क्रिकेट का एक कार्यक्रम उन्होंने स्टार्ट किया था, ये उसके लिए था। किंतु आज इस ग्राउंड का स्वरूप देख के हम कल्पना नहीं कर सकते कि 2 साल पहले ये ग्राउंड किस प्रकार का होगा। यहाँ रेत के टीले हुआ करते थे, बिल्कुल बड़े बड़े झाड़ियाँ यहाँ हुआ करती थी, आप यहाँ चल नहीं सकते थे। और आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि ये मैदान आज विश्व के, अगर आप कहीं विदेश में जाते हैं तो इतने सुंदर ग्राउंड देखने को बहुत कम मिलते हैं। इस प्रकार का स्वरूप और इस प्रकार का जो हम देख पा रहे हैं वो बिना ईमानदारी से काम किए हुए नहीं हो सकता। तो मैं आज आपसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा, आप जयपुर की हैं, हम लोग सब जयपुर के हैं, हमें हमारी संस्कृति पर, हमारी धरोहर पर गर्व होना चाहिए और विशेष रूप से हमको इसको बचा के रखने की आवश्यकता है। मैं इसी नाते एक प्रकरण आपको सुनाना चाहूँगा। जब हमारे केंद्रीय सरकार ने स्मार्ट सिटी की घोषणा की तो जयपुर को भी इसमें शामिल किया और 2400 करोड़ रुपए का बजट जयपुर को आवंटित किया। किंतु यहाँ जो लोग थे, जिसे हम लाल पिताशाही कहिए या नौकरशाह कहे, उनको समझ नहीं होती कभी, वो इस स्मार्ट सिटी को सीतापुरा में ले गए। अब सीतापुरा में जयपुर के हेरिटेज का क्या मतलब? फिर हमने प्रयास किया और इस स्मार्ट सिटी के सारे बजट को हम लोग जयपुर हेरिटेज में लेकर आए। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व के अंदर अगर जयपुर की पहचान है तो वर्ल्ड सिटी का। जो पर्यटक जयपुर में आता है वर्ल्ड सिटी को देखने के लिए आता है, जंतर मंतर को देखने आता है, सिटी पैलेस को देखने आता है और गोविंद देव जी के दर्शन करने आता है, आमेर फोर्ट को देखने आता है। तो निश्चित रूप से जो हेरिटेज का बजट था वो यहीं लगना चाहिए था। जब तक हमारे पास कार्यभार था हमने इस बजट को सही ढंग से हमने प्लानिंग करके लगाने का प्रयास किया। तो सरकार बदलने के साथ साथ ये बजट खनबन होने लगा है और जयपुर का जो हमारा वर्ल्ड सिटी है इससे बाहर ये पैसा जाने लगा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप दिल्ली के अंदर हैं और स्मार्ट सिटी का सीईओ दिल्ली के अंदर ही बैठता है, इनके मंत्री भी दिल्ली के अंदर होते हैं। जो 2400 करोड़ का बजट जयपुर हेरिटेज को, जयपुर वर्ल्ड सिटी को अलर्ट हुआ है, वो वर्ल्ड सिटी में ही लगे, इसका आप प्रयास करें। क्योंकि आप ये प्रयास कर सकती हैं और ये प्रयास सफल भी हो गया। क्योंकि हमारा जो 2400 करोड़ रुपये जयपुर वर्ल्ड सिटी में इसके हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए अलॉट हुआ था, इसके हेरिटेज को और बढ़ाने के लिए अलॉट हुआ था। जयपुर का जो हेरिटेज है, मैं ये कहूँगा कि जब 1981 के बाढ़ आई तो केवल वर्ल्ड सिटी बचा था। इसका एक कारण था हमारे का स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम। जब निगम में थे हमने ये अनुभव किया कि जयपुर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो लगभग 6/8 का है, पूरे शहर में सिस्टमेटिक रूप से बसा हुआ है। सर्दी गर्मी बारिश के अंदर जयपुर में कहीं भी बिना भीगे, बिना गर्मी के थपड़े खाए आप घूम सकते हैं। ये सब जयपुर बसाने वालों की सोच थी। उस सोच को आज बरकरार रहे, वो हमारा हेरिटेज स्वरूप आज बरकरार रहे, इसके लिए स्मार्ट सिटी से जो बजट आवंटित था उसका हमने एक प्लानिंग की।
किंतु वो प्लानिंग इस नई सरकार के द्वारा बिल्कुल चेंज कर दी गई है, बिल्कुल परिवर्तित कर दी गई है। और जहां सरकार को पैसा लगाना चाहिए वहां पर हेरिटेज सिटी का पैसा कम मिल गया है। तो निश्चित रूप से इसका नुकसान जयपुर शहर को होने वाला है, जयपुर परकोटे को होने वाला है। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये सभी चीजें जयपुर से, जयपुर सिटी से संबंध रखती है, जयपुर हेरिटेज संबंधित रखती है। और आप भी जयपुर के मूल हैं, हम भी जयपुर के मूल निवासी हैं। निश्चित रूप हम ही लोगों को आए आज आप पधारे यहाँ, और निश्चित रूप से आपके पधारने से हम सभी का और जो टीम यहाँ भाग लेने आई इनका उत्साहवर्धन होगा, जोश आएगा इनके अंदर। और आपके उद्बोधन के बाद में निश्चित रूप से हमको कुछ ग्रहण करने की बिल्कुल करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे आज की मुख्य अतिथि राजकुमारी दिया बाईसा से कि वो आए और अपना संबोधन प्रकट करें। भारत माता की, भारत माता की जय जब हम लोग बोलते हैं ना तो हमें एकदम से एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। सही बोला ना मैंने? क्योंकि अभी इतनी सारी स्पीचेस सुनने के बाद मैंने देखा कि हमारी सारी टीम और सभी गर्ल्स बहुत, एक तो गर्मी में, एक इतने समय से आप लोग सुन रहे हैं, पेशेंटली सुन रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं, लेकिन आप लोगों में थोड़ा सा इम्पेशेंस भी आ गया। तो भारत माता की जय जब भी लगे कि एनर्जी कम हो रही है, उस समय अगर भारत माता की जय बोलोगे ना तो एकदम से एनर्जी आ जाएगी। तो एक ये बात हमेशा ध्यान रखना। आज राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन और यूनियन फुटबॉल क्लब के द्वारा जो हमारी गर्ल्स की टीम के जो मैच में आज इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे आरएफए सेक्रेटरी दिलीप सिंह जी आपका धन्यवाद दूंगी कि मुझे आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। और उससे भी बड़ी बात है कि मुझे आपने पेट्रन बनाया है ऐसे ऐतिहासिक फुटबॉल क्लब का, जिसके लिए मैं बहुत ही, एक तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे पूर्वजों का कि उन्होंने फुटबॉल के बारे में सोचा। और ना केवल फुटबॉल, ना केवल स्पोर्ट, लेकिन आज जो जयपुर में हमारी इतनी सारी जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे एयरपोर्ट है, एसएमएस हॉस्पिटल है, रेलवे सिस्टम है, सेक्रेटेरिएट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जयपुर में जिनके बारे में उन्होंने सोचा और उस समय उनका निर्माण किया, जो आज के समय में भी हम लोग सब उसको हम धन्यवाद देते हैं कि वो उस समय की सोच जो थी, जो विजन था, उसकी वजह से आज हम लोगों को इतनी फैसिलिटीज उपलब्ध हो रही। सेक्रेटरी यूनियन फुटबॉल क्लब महिपाल स्वामी जी का आपका बहुत बहुत आभार। आपकी मेहनत से आज जितने सारे हमारे, ये तो मैं तीसरी चौथी बार आई हूँ, लेकिन जिस ऊर्जा से आप लगातार टूर्नामेंट्स का आयोजन कर रहे हैं, कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगी। विपरीत परिस्थितियों में भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। मनोज भारद्वाज जी जो हमारे पूर्व डेप्यूटी मेयर भी रहे हुए हैं, और इनका समय समय पर मुझे भी उनकी गाइडेंस भी मिलती है, सहयोग भी मिलता है। और आगे आने वाले समय में हम फिर से एक बार फिर से मिलकर जयपुर की विरासत के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अभी तो समय अनुकूल नहीं है, पर कुछ ही समय की बात है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोगों के पास फिर से अपॉर्चुनिटी आएगी, अवसर आएगा कि हम लोग जयपुर में जो अधूरा काम था उसको पूरा करें। हमारे जय नारायण गहलोत जी जो चेयरमैन हैं आरएफए के, आपका भी धन्यवाद। सरोज चौहान जी जो विमेंस कोच हैं, थैंक यू सो मच, ऑल योर एफर्ट्स। अभिनव स्वामी जी जो कोच हैं, माइकल रूस्टर जी, विजयदीप स्वामी जी, रतनलाल शर्मा जी, वह सभी यहाँ पधारे हुए अतिथिगण। यूनियन फुटबॉल क्लब जो कि हमारे लिए एक विरासत है, एक धरोहर है, और जिसको हम सभी को संभालने के लिए, उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी हम सब पे। आज राजस्थान से यहाँ उपस्थित फुटबॉल ग्राउंड में पूरे राजस्थान के सभी जिलों से उपस्थित जो हमारी गर्ल्स टीम्स हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी और अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। आप लोग राजस्थान का नाम रोशन करें। अभी तो इंटर
इंटरनेशनल में भी आप लोग जाती हैं और राजस्थान को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों को यही शुभकामनाएं दूंगी कि आप लोग इंटरनेशनली भी राजस्थान का नाम रोशन करें और भारत का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल, सरोज जी कह रही है कि मैं पूरे इंडिया में भारत की सबसे पहली महिला कोच थी, और बहुत गर्व की बात है कि आप भी राजस्थान से ही हैं और इंटरनेशनल कोच भी रही है, और आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है स्पोर्ट्स में, हमारे स्पोर्ट्स हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, लेकिन हमारा रोल मॉडल होना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना है। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगी हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में और गर्ल्स को आगे बढ़ाने में, इतनी टैलेंटेड हमारी स्पोर्ट्समैन गर्ल्स हैं पूरे देश में, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी इस मंच के माध्यम से। सभी खिलाड़ियों को कहूंगी कि मैं ज्यादा स्पीच नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत गर्मी है और बहुत समय से आप लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, सब लोग अपना सर हिला रहे हैं कि बिल्कुल हम लोगों को, हम सब लोग अब खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि खेलने के लिए हम लोग यहाँ सब लोग आए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, कंग्रेचुलेशन। आगे आने वाले समय में मनोज जी, अगर कोई केंद्र सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की सहयोग, किसी भी प्रकार की कुछ भी जरूरत हो, सपोर्ट की जरूरत हो, बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि इसको प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, नहीं तो यहाँ भी कंक्रीट वॉल आ जाता या और कुछ आ जाता। जिस तरह से राजस्थान हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जयपुर शहर, लेकिन इसकी अगर हालत देखेंगे आप तो कहीं से भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं दिख रहा है। उसको बचाने के लिए हम सबको मिलकर करना होगा, मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा, और हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जो नागरिक हैं, जो यहाँ पर बसते हैं, यहाँ रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को हम सब मिलकर निभाएंगे। एक बार फिर से सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया आप लोगों के बीच। ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम्स प्रेजेंट हियर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक बार जोरदार तालियां दिया बाइकर के लिए। और इन्हीं की बात का मान रखते हुए मैं कुछ चंद लाइनें हमारी महिला खिलाड़ियों के लिए बोलना चाहूंगी। महिला के उत्थान के लिए लगातार ये प्रयासरत है, तो ऐसे में कुछ प्रयास मेरी तरफ से भी। पंख भी है, उड़ान भी है, पंख भी है, उड़ान भी है, हौसलों में अभी जान भी है, इन भुजाओं में अगर ताकत है तो आसमान छूने का अरमान भी है। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, आप सभी टीमें अपना अपना ग्रुप बना लें। भाई जी राज आपके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, थोड़ा समय निकाल सकते हैं आपके लिए। सभी टीमें अपना अपना ग्रुप बना लें, प्लीज अपना अपना ग्रुप बना लें। थोड़ी जगह ले लें, लेफ्ट राइट दोनों तरफ सभी टीमें अपना अपना ग्रुप बना लें। अभिनव स्वामी सभी टीमों को अपना अपना ग्रुप बना लें और थोड़ा थोड़ा लेफ्ट राइट खिसका के मैं निवेदन करना चाहूंगी दिलीप सिंह शेखावत जी का, जो कि आरएसए के सचिव हैं, वो हमारी दिया बाइसा का स्वागत करेंगे। मोमेंटो उनको गिफ्ट किया जाएगा, भेंट किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां। एक छोटी सी भेंट। और आखिर में अभिनंदन स्वरूप मैं चाहूंगी यूनियन फुटबॉल क्लब के कोऑर्डिनेटर अभिनव स्वामी, साथ ही ग्राउंड इंचार्ज विजय दी स्वामी वो आए और दिया बाइसा का अभिनंदन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी हमारी राजकुमारी दिया भाई साहब खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करें। सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वो एक लाइन में खड़े हो जाएं, पंक्तिबद्ध हो जाएं। टीम कैप्टन आगे रहेगा। आप दूसरा पीछे रहेंगे अंदर। ये क्या कर रहे हो? सिंगल लाइन। नहीं सर, सिंगल ओनली कैप्टन आगे। ओनली कैप्टन आगे बैक साइड तो बैक हो जाओ बेटा। ओनली कैप्टन अपना नाम और से जुड़ेगा ना। अपना नाम और से जुड़ेगा नाम नहीं। ठीक है? आपको अपना नाम और अपने जुड़े का नाम लेना है। मेरा निवेदन है कि दिया कुमारी जी के स्वागत के लिए राजमिक्स अध्यक्ष विजेता चारण जी जाएं और उनका स्वागत करें। महिला अधिकारी और कर्मचारी महासंघ की ये अध्यक्ष है।
रेफरी टीम को लाइन अप करें, तत्काल मैच शुरू करवाएं। रेफरी टीम को लाइन अप करें, तत्काल मैच शुरू करवाएं और भाई जी राज मंच पे पधारेंगे वापस और मैच देखेंगे। ये पहलवानों भी अपनी फटाक ग्रुप बना लें। रवि जी शर्मा हमारे बीच में है और ग्रुप है, क्या बात है, इतना शानदार दीवाना। और यहाँ पर दिखने चाहिए। मैच So welcome back to the second half. You're watching Rajasthan Senior Women's Football Championship live on Sportscast India. And we are back at the Union Football Ground with match number 2. Is Jodhpur leading 2-0 against Bharatpur. And at the break, and we are getting ready with the second half. The first half goals from Sangeeta and Vedanshi for the team in yellow. It will be interesting to see whether Bharatpur can fight back in the second half. Just concluded with the opening ceremony. All the speeches have been made. All the introductions done. And this is Divya Kumari, a member of Parliament Lok Sabha, along with the Rajasthan Football Association Secretary Dilip Kumar. Divya Kumari, she has been felicitated.
The game between Ajmer and Bhilwara is going to be quite a contest. After this match. We're going to kick off proceedings to the second half soon. Stay tuned. So referee blows the whistle and we are underway with the second half between Jodhpur and Bharatpur. And straight away on the attack is the team in yellow. They are in the lead. Sangeeta Thakuri with a wonderful strike. And now coming away with the ball is Bharatpur, looking to make the first move of the second half. A tackle from Urmila. And now pouring forward Jodhpur. No conviction in the clearance. It's still to a yellow shirt. Has gone over the crossbar for a goal kick. A promising start to the second half. Chittorgarh already qualified for the quarterfinals. Jodhpur looking favourable. There could be the second team to make their way into the final 8 of this tournament. Bharatpur, they've enjoyed possession but have failed to create any clear-cut scoring opportunities as of yet. Shouts of handball and given. So free kick for Bharatpur. From 30 yards out, this free kick. She is looking to go direct. It's into the area. And gone behind. The referee awards a corner kick to Bharatpur. They got to make this pressure count. The ball comes in, scrambled away. Now on the counter, it's 4 against 3. Still keeps going, wonderful footwork, accelerating past the entire defensive unit, and now she's 1-on-1 for the third. And
She completes it with absolute expertise. What a move from Jodhpur. She has taken on the entire of Bharatpur defense and proved herself to be a maestro for her team. It was a 4 against 3 situation. She's gone past all 4 of them with one nice shimmy. Left the entire defense behind and tripling the lead for her team. Now we have a goal within 4 minutes into the second half. Given as a foul throw. Vedanshi with her second strike of this morning. Number 10 of Jodhpur. But here comes Bharatpur. Ruby was looking to thread it through. On to the second ball. Team in white. Can they develop something from the left hand side? Shooting chance. Goes for the pass and inside the 6-yard box. And have they found the back of the net? Because they are celebrating. It seems like they have reduced the margin here. Some issues with the side net. And so Bharatpur, they have pulled one back here. 2 very quick goals within 6 minutes into the second half. The score line reads 3-1 now. Ball played into a Surbi, and a following up was Nidhi. Staying sturdy over there, Ishika. For Jodhpur, that's a delightful ball forward. Keeper once again slightly advanced. The clearance is straight to a yellow shirt. And somehow they get it away. Harshita reducing the margin for Bharatpur, the number 9. They lose, they go out of this tournament. And now fancying herself for another pile driver. Measuring the distance. Just planning for a long run-up. Got to generate a loss of pace and backlift to get the technique right. Goes direct with the attempt. Enough purchase on the ball and the flick on. That was very, very clever from Bharatpur. Just couldn't divert it goalwards. They come again. The ball is recollected. Khushi stops it. Oh, wonderfully done by Khushi. Clatters the ball into a yellow shirt.
Another free kick. This time much closer to goal. Another high attempt and over the crossbar for a goal kick. Festive mood at present here in the Union Football Ground with regards to this Senior Women's Championship. The first time ever it's been launched in the state of Rajasthan. The R League Senior Men's also going on. We just concluded with the first phase. Change meanwhile, Surbi replaced by Damini. Making the first substitution is Bharatpur. We are into the last quarter of the game. Not enough on that shot. It was a difficult angle as well. Vedanshi, she's on a hat-trick. Playing with a slightly high line. Bharatpur in the second half. They have a valid reason. They are the side trailing. There's still a couple of goals between them and Jodhpur. Trying their best to keep up the pressure on the women's in yellow. This time cross from the left. Looks like an own goal, and no, it isn't. So lucky Jodhpur. Nearly an own goal from that cross. The goalkeeper was completely flabbergasted. Corner for Bharatpur. They will look to keep up the pressure and try and get the second goal if possible. Now can they hit them on the break? Once again is Vedanshi. And she can do the damage all on her own. Vedanshi again inside the box from a difficult angle. Easy chance and 4-1. Jodhpur. Wonderful pass from Vedanshi. Picking out an yellow shirt at the back post. She was left unmarked, no one challenging her. An easy tap in. Goals are raining here at the Union ground. Vedanshi just outfoxing her marker. Gets inside the box.
Excellent vision. Picks out the option on the far post. And she makes no mistake tapping it in. Oh, cleverly done. Jodhpur again in the attack. Vedanshi. Wonderful control and balance. She was challenged from behind but managed to stay on her feet. Tanu was progressing down the line, right, and stopped by Kavita. As the scorer of the fourth goal, Anita, the number 11. The ball played forward. Good anticipation from Raksha. Kushi. Drifting onto the wings. Kushi keeps going. The cross is out of play. A long attempt. Just bobbing out of the area.
into the channel. First time bowling, easily dealt with. The combination play breaks down due to a poor touch. This is much better. The number 9 turns towards goal and flashes the shot straight to the keeper. Harshita with another attempt on goal. Can't find the back of the net. Went straight at Tanuja. Either side would have been troublesome. That's a fine reverse pass. Keeper was nearly caught off guard. She was nowhere near to her position. The last 5 minutes of this game. Stepping past, ball from deep. Just muscled away. Not a valid challenge. According to the referee, a free kick awarded to Bharatpur. A nice height and distance on the free kick. The pass is a bit disappointing. Miss it in the middle of the pitch. Nicely brought down. Capitalizing on her back touch. An awkward bounce. Now falls to a white shirt. Given away. This is constructive. Keeper tried to come out and narrow down the angle, but it has been squeezed in from the right hand side. And 5-1 in favor of Jodhpur. With less than 2 minutes remaining on the clock, they are simply running away with the game. Keeper slightly confused whether it's going to be a cutback or a shot. In the end, beaten at a near post
Anita also gets her second of this morning. So both Vedanshi and Anita on 2 goals each. The opening goal was scored by Sangeeta, the number 15. So the attackers of Jodhpur, all 3 of them in the score sheet. Last minute of this game. A yellow card to the Jodhpur manager. He must have said something. So that's the full-time whistle, and after Chittagong, Jodhpur becomes the second team to qualify for the quarterfinals of this Rajasthan Senior Women's Football Championship. It is a 5-1 comprehensive victory for them. 2 goals in the first half and 4 in the second, 1 for Bharatpur and 3 in favour of Jodhpur. Make sure you do not go anywhere. We will come back shortly with the third game of the day.